Good morning, students. Okay, in the previous session, we had discussed about the motions of the earth, the two motions of the earth, that is rotation and revolution. Okay, we had seen the meanings of the two, then which are the phenomena that happens due to rotation, what are the effects of rotation. We had also discussed about what is revolution. Okay, today we'll be discussing the last topic of the chapter, and it is the last session of that chapter, and the topic is effects of the earth's revolution. अर्थ के revolution की वजह से क्या क्या हो सकता है. Okay, so the revolution of the earth in its elliptical orbit causes two changes. One is varying lengths of day and night. Day और night में changes होना, मतलब वेरिंग लेंथ्स, अलग अलग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. Sometimes the days are longer, sometimes shorter. Why is it so? On some days the nights are longer, the nights are shorter. So why it is so? That is because of the revolution of the earth. And second is the changing of seasons. Definitely, if the days and nights have the variations, that will affect the changes in the season as well. So let us see in detail what each of the topic discusses. Okay, varying lengths of days and nights. Due to the tilt of the Earth's axis at 66.5 degree to the orbital plane, Earth receives unequal rays of the sun at different places during different times of the year. अभी अर्थ जो है इट इज़ नॉट स्टैंडिंग स्टिल. ओके, वो थोड़ा टेढ़ा है, इट इज़ लिटिल बिट टिल्टेड. कितने डिग्री के एंगल में? 66.5 डिग्री to the orbital plane. Okay, because of this what happens, all the portions of the earth now, they don't get proper, or they do not get equal amount of sun rays. कुछ जगह पे सन रेज जो है वो ज़्यादा होता है, सम प्लेस इट इज़ लेस. दैट इज अर्थ रिसीव्स अनइक्वल रेज ऑफ द सन, and that too at different times of the year. As for example, suppose in Jan to May, one place might have received maximum sunlight. Then because of the rotation, the other place now, from May, after May onwards, the other place might be having maximum amount of sunlight. That is from June to December. So that is a variation. Okay. मतलब अर्थ जो है वो थोड़ा टिल्टेड है, इसके वजह से हर एक प्लेसेस में एक अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं आता है, वो वेरी करता है पूरे साल के दौरान. ओके, द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21st June and on the Tropic of Capricorn on 22nd December. So जो सन के जो रेज है ना, वो वर्टिकली ये दोनों जगह पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे कब आते हैं? साल में दो बार. एक है 21st जून को, जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है, और दूसरा है 22nd December, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आता है. Wherever the rays fall vertically, days are longer. Wherever they are slanting, days are shorter. तो जो भी एरिया है ऑन अर्थ, विच एवर प्लेस वेर द सन्स रेज आर reaching there vertically exactly upon it, those place are having longer days. Okay, and the other places will be have where the rays are coming in a slanting way, टेढ़ा आ रहा है, वहाँ पे days will be shorter, nights will be longer. The two tropics are in opposite hemisphere. Both the tropics, that is Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, are both the tropics are in the two hemispheres. Yes, and that too opposite. Therefore, seasons in the northern and southern hemisphere are opposite. अब इसके वजह से जो भी सीजन्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ही अलग है. The northern hemisphere remains inclined to the sun during 6 months of the year. जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ होता है 6 महीना. ठीक है. सर्टेनली द सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन ड्यूरिंग दिस टाइम. अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टेढ़ा है तो नॉर्थ वाला अर्थ सन की तरफ झुक गया, तो डेफिनेटली साउथ वाला टाइम, मतलब साउथ सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन से दूर हो जाएगा. इट इज़ अंडरस्टूड. यस,
That is what they are saying. This phenomenon is repeated throughout the year and the conditions are reversed every 6 months in north and south hemisphere. Now what happened is after the rotation, अब ऐसा होता है कि जो south है that will be coming towards the sun and the north will be going away from the sun. So this phenomena keeps on changing, okay, within every 6 months gap. Yes, and that leads to various other changes. Since the length of the days and nights are decided by the total heat received by the duration of the day and night varies between summer and winter in the northern and southern hemisphere. Since the length of the days and nights are decided by the total heat received, the duration of the day and night varies between summer and winter in the northern and southern hemisphere. जो लेंथ ऑफ द डेज है और नाइट्स है वो किस पर डिपेंड करता है, कितना अमाउंट ऑफ सनलाइट आ रहा है उस पर, टोटल अमाउंट. यस, तो जो ड्यूरेशन है उस डे और नाइट का वो वेरी करेगा. समर का अलग होगा, विंटर का अलग होगा. समर में डेज लॉन्गर होंगे, नाइट शॉर्टर होंगे. विंटर में नाइट्स लॉन्गर होंगे, डेज शॉर्टर होंगे. एंड यही चेंज होगा दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एज वेल एज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. Understood what has been explained in it? Yes. So we have discussed about varying lengths of day and night. Yes, there is also a diagram given 2.7. See, the tilted position is shown. You can see the north side is receiving the maximum heat and the other it is dark. Okay, so this is that inclined towards the sun, 66.5 डिग्री. इसमें क्या है कि जो बीच का पोर्शन है इक्वेटर और ऊपर नीचे के, वहाँ पे रेज एकदम प्रॉपरली आते हैं, बाकी जगह स्लैंटिंग, शायद और कुछ जगह पे तो पहुँचते ही नहीं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ वर्टिकली द सन रेज कमिंग एंड अदर स्लैंटिंग. ठीक है, जहाँ पे वर्टिकली आ रहा है वहाँ पे डेज लंबे होंगे और जहाँ पे स्लैंटिंग आ रहा है वहाँ पे डेज छोटे होंगे. ठीक है, अब डेज में वेरिएशन आया, डे और नाइट में वेरिएशन आया, वही वेरिएशन आपको समर और विंटर में सेम वेरिएशंस दिखेंगे. और ये दोनों चेंजेस हमको नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में एवरी 6 मंथ्स में देखने को मिलता है. दैट इज द रीजन द सीजन्स आल्सो टेक प्लेस. So we have discussed what we have discussed that due to the tilt of the Earth's axis, Earth का axis, Earth जो है, हाँ, वो 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन की तरफ झुका हुआ है, जिसके वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेस सन का. ठीक है, कुछ जगह पे वर्टिकली द रेज आर कमिंग, अदर एरियाज इट इज़ ब्लॉकिंग, ओनली स्लैंटिंग आर कमिंग. ओके, एंड द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली गिरता है ऑन 21 जून और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर. Yes, one takes place in the summer and the other in the winter. Yes, और जहाँ पे vertically गिरता है that place will experience the longest day, and where it is coming slanting, where the rays are coming slanting, there will be shorter days. Okay, and then we have discussed how both the tropics are in the two hemispheres, northern and the southern hemisphere. Therefore, the northern hemisphere, where it is inclined to the sun for 6 months of the year, that time the southern hemisphere will be away from the sun. Okay, they will be receiving slanting rays, because of which they will be having longer nights and shorter days. Winter, and after 6 months it will reverse, the whole phenomena reverse, and the north will be experiencing winter and the south will be experiencing summer. Yes, so this was the varying lengths of days and nights as we have discussed. Okay, and this variation in the length of day and night fully depends upon the total amount of sunlight it receives. Okay, you have to draw the diagram 2.7 in your notebook. Now there are some questions given over there below the diagram. How long would a day be on the Tropic of Cancer on 21st June? So the answer is 14 hours. 14 hours. HOURS.
Second question. Which season do the places on Tropic of Cancer experience? 21 जून के टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन सा सीज़न एक्सपीरियंस कर रहे होंगे? समर सीजन. यस, वी आर एक्सपीरियंसिंग. थर्ड, what would be the duration of the day and night? Duration of day and night would be how? Day would be longer and nights will be shorter. So right, you have to write the answer. Days will be longer and nights will be shorter. Fourth question. What will occur on the Tropic of Capricorn on 22nd December? Summer. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वहाँ पे उस टाइम पे समर होगा बिकॉज दे विल बी रिसीविंग द मैक्सिमम सनलाइट. यस, what vertical rays will be coming? How long would a day be on the Tropic of Capricorn on 22nd December? It is also the same answer, about 14 hours. 14 hours. Okay, तो 14 hours तो मिनिमम उस पर डे रहता ही है, तभी वो लॉन्गेस्ट डे बन जाता है. ठीक है, हाँ, अंडरस्टूड. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सीजन्स. We experience change in season due to revolution of the earth, as I told you, which is the second effect of earth's revolution, that is changing seasons. Yes, so we experience this changes in the season. अलग अलग seasons क्यों आते हैं? यही अर्थ के revolution के वजह से. Due to the revolution of the earth around the sun on its tilted axis. Okay, टिल्टेड जो एक्सिस है, टिल्ट होके, टेढ़ा होके जो वो रिवॉल्व होता है ना, उसके वजह से सीजन्स में भी चेंजेस आते हैं. ओके, ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल फेसेस द सन at regular intervals, and because of this revolution the north pole is there now, the north pole, yes, that faces the sun at regular intervals. Okay, it is facing the sun maximum. The rays of the sun fall vertically either on north or south of the equator. ठीक है, जो सन के रेज है वो आइदर नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में वर्टिकली आता है या साउथ ऑफ द इक्वेटर में. दैट इज वी कैन से डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ फेस द सन एट वेरियस टाइम्स ऑफ द ईयर. इन शॉर्ट वी कैन से अलग अलग प्लेसेस को अलग अलग टाइम पे सन का रेज मिलता है पूरे साल के दौरान, अलग अलग वेरिएशन में मिलता है. ऐसा नहीं कि मंडे को इतना मिला, ट्यूसडे को इतना मिला, ऐसा. The variations keep on changing because because of this tilted axis. This results in the formation of 4 seasons: summer, winter, spring and autumn. Okay, because of this 4 seasons take place. One is summer, one is winter, one is spring and one is autumn. सो हमको चेंजिंग सीजन्स इसके लिए एक्सपीरियंस होता है क्योंकि अर्थ जो है वो रिवॉल्व होता है उसके टिल्टेड एक्सेस पे अराउंड द सन. और तुम्हें ये पता है कि नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ ही है. हाँ, इसके लिए मैक्सिमम हीट उसकी तरफ जाता है. और ये जो वर्टिकल हीट रिसीव करने का जो कंसेप्ट है वो दोनों पोल्स को मिलता है. मतलब इक्वेटर के ऊपर वाले जो भी हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है. ठीक है, इसके वजह से अर्थ के अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएशन में हमको डेज और नाइट्स देखने मिलता है क्योंकि रेज अलग तरीके से रिसीव करते हैं. और इसके वजह से डे और नाइट में वेरिएशन आता है तो डेफिनेटली सीजन्स भी आएंगे. Those part of the earth which receives more sunlight experiences summer. वो portions जिसमें maximum sunlight पूरा vertical rays of the sun आता है, they will be experiencing summer during that time. Okay, while those that receives less sunlight experiences winter. Of course, suppose the vertical rays are on the north part of the equator, so those portions will be experiencing summer, and those areas which are away from the vertical rays of the sun, मतलब जिस पे स्लैंडिंग ही आ रहा है, वो लोग एक्सपीरियंस करेंगे विंटर्स क्योंकि वहाँ पे नाइट्स लंबे होंगे. अंडरस्टूड द डिफरेंस? So because they are receiving the maximum sunlight, they will be experiencing summer, while that which receives less sunlight will be experiencing
winter. The northern hemisphere experiences summer in the period between 21st March to 21st September. This duration from March to September. During this duration, the northern hemisphere is experiencing summers. Okay, while it is winter in the southern hemisphere, और इस दौरान southern hemisphere में winter season होता है. Okay, understood? The change of seasons is a phenomenon that directly affects the human life. And ये changing seasons जो है, it is affecting the human life to which we human beings have to adapt easily. Clear? Okay, so we have also discussed about seasons, how the seasons keep on changing according to the varying lengths of sunlight that they receive from the sun due to the tilted axis of the earth. Yes, उसके हिसाब से वेरिएशंस आते हैं सीजन्स में भी, और जो लेंथ ऑफ द डेज और नाइट है उसके वेरिएशंस की वजह से. क्लियर? तो चेंजेस क्यों क्या क्या होता है सीजन्स के, मेनली 4 सीजन्स होते हैं: समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. जो पोर्शन ऑफ द अर्थ मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है वहाँ पे समर है, और जहाँ पे स्लैंटिंग रेज है मिनिमम सनलाइट रिसीव होता है वहाँ पे विंटर होगा. ठीक है, और ये फिनोमिना 6 मंथ्स में चेंज होता है. इसके लिए नॉर्थ में समर्स 21 मार्च से 21 सितंबर तक होता है, एंड उसके बाद साउथ में समर होता है सदर्न हेमिस्फीयर साइड में. ओके, एंड ये जो चेंजिंग सीजन्स हैं वो एक फिनोमिना है जो डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को. ओके, अंडरस्टूड? सो दीज आर द 2 effects of revolution: varying lengths of day and night and seasons. varying lengths of day and night सेम है, कैसा सनलाइट रिसीव करते हैं उसकी हिसाब से डे और नाइट लंबा और छोटा होता है. अब ये लंबा और छोटा जिस वेरिएशन में होता है उसके हिसाब से सीजन्स भी चेंज होते हैं. दैट इज़ द सेम कंसेप्ट. ओके, अंडरस्टूड हाउ दे आर रिलेटेड? मतलब देखो, सन के रेज वर्टिकली आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे डेज लंबे हो रहे और नाइट्स छोटे हो रहे. इसके वजह से वहाँ पे वेरिएशन आ रहा है डे और नाइट में, और उस दौरान समर सीजन चलता है. अब ये समर में जब लॉन्गेस्ट डे होता है दैट इज़ 21 जून. अब पता चला? क्लियर हुआ कंसेप्ट? सिमिलरली बाकी का जो हेमिस्फीयर है सदर्न में 22 दिसंबर के टाइम पे वर्टिकली रेज आते हैं, इसके लिए डेज उस टाइम पे लंबे होते हैं, और उस टाइम पे साउथ में समर होता है, साउथ हेमिस्फीयर में समर होता है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर. इसके लिए हमारे लिए वो विंटर सीजन है. तब हमारे नाइट्स लंबे होंगे 22 दिसंबर को, क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर में उस दिन सनलाइट ज़्यादा होता है, तो हमारे साइड नाइट ज़्यादा रहता है. क्लियर? Understood the variation, the differences? Okay. Next, we will be discussing about solstices and equinoxes. This you have learned in the previous class in the 6th. Still, let us have a discussion regarding the same. First, we'll begin with solstices. Okay, SOLSTICES. Yes, solstices. It's not given in detail in your textbook, but you should know about the concept. Therefore, you have to pay attention. Okay, the day on which the midday sun is vertically overhead at the Tropic of Cancer or the Tropic of Capricorn is called a solstice. समझ में आया? Okay. It is the longest day in that hemisphere. Now you got a clue? There are 2 solstices in a year. They are summer solstice and winter solstice. Okay. So वो दिन, ठीक है, that particular day when the midday sun, जो sun जो है, it is directly vertically exactly overhead, पूरे जो भी रेज है वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रहा है या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ रहा है, उस फिनोमिना को हम कहेंगे सॉल्स्टाइस. अब भी हमने डिस्कस किया ये चीज़ क्या,
ऑन 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन के रेज ओवरहेड होते हैं, और 22 दिसंबर सदर्न हेमिस्फीयर में सन के रेज वर्टिकली ओवरहेड होते हैं। तो ये जो दो डेट्स हैं, दे आर नथिंग बट द solstices, okay? And our country being a part in the northern hemisphere, we experience summer solstice and winter solstice, because one solstice which is occurring on tropic of cancer on the date 21st June, which is a part of summer season. So we have the longest day and the shortest night, which is nothing but the summer solstice. Okay, and winter solstice is on 22nd December, when we are experiencing winter season and the days are shorter and the night is the longest. क्लियर? पता चला सॉल्स्टाइस क्या है? तो वो दिन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मैक्सिमम सनलाइट आता है, वर्टिकली उन पे गिरता हो सनलाइट, ठीक है? और दैट इज़ 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है? और इसके वजह से एक साल में दो टाइप के सॉल्स्टाइसेस होते हैं, समर और विंटर। Summer solstice जो है which occurs on 21st June. That is, on summer solstice the sun rays fall vertically on the tropic of Cancer. The northern hemisphere experiences the longest day and the shortest night, and the southern experiences the shortest day and the longest night. अब 21st June को नॉर्थ हेमिस्फीयर में मैक्सिमम सनलाइट आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमको डेज़ लंबे दिख रहे हैं और नाइट्स छोटे। उसी टाइम साउथ में क्या हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स लंबे हो रहे और डेज़ छोटे। ओके, एंड नेक्स्ट इज विंटर सॉल्स्टाइस। वो कब होता है? 22 दिसंबर को। उस दिन सन के रेज डायरेक्टली गिरते हैं किस पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जिसके वजह से सदर्न एक्सपीरियंस जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट, और उसी दौरान नॉर्थ में क्या होता है? शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट। ओके, तो हमने ये जो नाम है समर और विंटर, ये किस पर्सपेक्टिव में दिया है? बिकॉज आवर कंट्री इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वी आर एक्सपीरियंसिंग समर सॉल्स्टाइस एंड विंटर सॉल्स्टाइस, बिकॉज उस टाइम पे हमारा विंटर होता है, तो हमने उसका नाम विंटर सॉल्स्टाइस दिया है, और ऊपर का समर सॉल्स्टाइस, ठीक है? तो समर सॉल्स्टाइस में डेज लंबे और नाइट्स छोटे, और विंटर में नाइट्स लंबे और डेज छोटे, ठीक है? डेट्स याद रखना है, समर 21 जून एंड विंटर सॉल्स्टाइस 22 दिसंबर। दैट्स इट। एंड व्हाट हैपन्स, क्यों होता है? क्योंकि सन के रेज मैक्सिमम होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और दूसरे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। दैट्स इट, डन। ओके, अंडरस्टूड? यस। नाउ वी आर मूविंग टू इक्विनॉक्सेस. What we are discussing? Equinoxes. On 2 days of the year, the midday sun is vertically overhead at the equator. ये भी हमको पता है। 2 दिन आता है साल में, ठीक है? 2 दिन आते हैं जिस दिन सन जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वेटर पे होता है, ठीक है? सारे रेज किस पे गिरते हैं? सिर्फ इक्वेटर पे। हाँ, ऑन दीज डेज द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज सेम throughout the world. These days are called equinoxes. The two equinoxes are spring equinox and autumnal equinox. Yes, equinox, equi means equal. So it is easily understood. Equator जो एकदम बीच में है, तो in a year there are 2 days, ठीक है? ऐसे 2 दिन आते हैं जिस दिन the days and the nights both are equal. And why they are equal? Because the vertical rays are directly falling on the equator. तो साल के वो 2 दिन जब सन के रेज जो है वो वर्टिकली इक्वेटर पे गिरता है,
दैट टाइम वी एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, मतलब हमारा डे का लेंथ और नाइट का लेंथ इक्वल 12-12 में इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। इसके वजह से हम उसको इक्विनॉक्सेस कहते हैं एंड पूरे दुनिया में सेम होता है। यस, द टू इक्विनॉक्सेस आर स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड द ऑटमनल इक्विनॉक्स। On 21st March, we experience spring equinox, okay, and on 23rd September, we experience autumnal equinox. When our summer season starts, okay, from 21st March till 21st September, तो वो जब स्टार्ट होता है दैट टाइम देर इज़ वन डे when both day and night is equal, that is on 21st March, ठीक है। So that is called spring equinox, and another is autumnal, when the autumn seasons are going on, that is called autumnal equinox. On that day also, that is on 23rd September, both the day and night will be having the same length, equal length. Yes, दैट इज़ बोथ द हेमिस्फीयर्स आर इक्वली इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, और ऐसा टाइम पे दोनों हेमिस्फीयर इक्वली इंक्लाइन होते हैं सन की तरफ। इसके वजह से वी एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड नाइट्स। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर 2, motions of the earth, what is rotation, what is revolution, what are the effects of rotation, day and night, yes, and what are the effects of revolution, 2, variation in the day and night, and because of which changing in the seasons, yes, it is also easy. Then we have moved to solstices, जब सन के रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे आते हैं। Summer solstice, days are long. Winter solstice, nights. Date, you have to find it. I have told you. Still, try to recall it. 21st June for summer solstice and 22nd December for winter. Yes. Then we have discussed about equinoxes. 2 days in a year when the both the days and nights are equal. Yes, and that is equinox, which is on 21st March and 23rd September. That's all about the motions of the earth. Okay, there is a small topic which is left, which is the sun at midnight. Okay, in the European nation of Norway, the sun does not set from midday to the end of July. ठीक है, मिड मई, यस, मई के हाफ से जुलाई के एंड तक वहाँ पे सन सेट नहीं होता है। ओके, दैट इज़ द कंसेप्ट। दिस मीन्स दैट सनराइज एंड सनसेट आर साइमल्टेनियस। सनराइज और सनसेट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, वो कंटिन्यूसली होते ही रहता है। सो द सन इज सीन इवन एट 12 इन द मिड नाइट, रात के 12 बजे भी आपको सन दिखेगा। सो वाई, नॉर्वे जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। सो 21st मार्च से 21st सितंबर के बीच नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो किसकी तरफ होगा, सन की तरफ। यस, इसके वजह से जो आर्टिक सर्कल है ना, वहाँ पे सन कभी भी सेट नहीं होता है, उसके रेज हमेशा रहते हैं, ठीक है। एंड इसके वजह से ये रेज जो है वो मई आधे से लेके जुलाई एंड तक कंटिन्यूसली गिरते रहता है, and because of which the Norway, which is, or the places which are nearby it, they will see the sun even at the midnight. So the sun continues shine even at 12 midnight. तो 12 बजे भी सन शाइन करता है नॉर्वे में, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ इंक्लाइंड हो गया है, तो आर्टिक पे काफ़ी लाइट आता है, सन रेज रिसीव होते हैं आर्टिक सर्कल पे, जिसके वजह से वहाँ पे हमेशा सन का राइज और सेट साइमल्टेनियसली चलता रहता है। ओके, दैट्स ऑल।